हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट रोहित और आज हम बात करेंगे HIIT। दिस इज़ अ पार्ट 2 सीरीज़। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लिंक, गो एंड चेक इट आउट। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल आरना विच इज़ रीफिट एंड रीस्टाइल। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो देन प्लीज़ फॉलो इट। ऑल्सो यू कैन हिट द बेल आइकन सो टू गेट द फर्दर अपडेट्स फ्रॉम मी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग। वहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ अपने डाइट, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। सो आज के वर्कआउट के बारे में बात करते हैं। आज का वर्कआउट एक HIIT है विच विल बी अ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। पहले वाला मैंने एक बिगनर्स के लिए डाला था, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। तो अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो एंड चेक दैट आउट। सो आज के एक्सरसाइज के आज के सर्किट के बारे में बात करते हैं। इस सर्किट में 11 एक्सरसाइजेस करूँगा मैं, वो 11 थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी। सो जब मैं पहला सर्किट करूँगा उसमें मैं रेस्ट नहीं लूँगा, ठीक है। 11 एक्सरसाइजेस के बीच में एक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लूँगा। सेकंड सर्किट जब मैं उसको दूसरी बार फॉलो करूँगा, उस पहले और दूसरे के बीच में मैं ऑलमोस्ट 2-5 मिनट का रेस्ट लूँगा। और सेकंड वाला जब मैं सर्किट फॉलो करूँगा उन सारी एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज के बीच में मैं 5 से 10 सेकंड का रेस्ट लूँगा। मिनिमम रेस्ट, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि 10 सेकंड का ही रेस्ट लेना है, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रेस्ट लेंगे। और जब मैं इसको तीसरी बार फॉलो करूँगा तो उसमें मैं 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लूँगा, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी सी फटीग हो जाएगी, बिल्कुल थक जाएगी, तो उस अकॉर्डिंगली मैं रेस्ट लूँगा। बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा रेस्ट मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए। इसीलिए इसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं। इंटेंसिटी बिल्कुल हाई रखेंगे इस वीडियो की और बिल्कुल एक्सरसाइजेस की, ताकि आपकी हार्ट रेट फास्टर हो और आपका फैट लॉस जल्दी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस देन। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. गाइस तो ये था 2.5 मिनट का वर्कआउट HIIT विच इज़ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा 2.5 मिनट में ऐसा लगने लग गया मेरे को। तो अभी ये वर्कआउट मेरे को 2 बार और फॉलो करना है इस सर्किट को मैं।
तो अभी मैं 2 मिनट का रेस्ट लूँगा, 2 मिनट के बाद मैं सर्किट को फिर से फॉलो करूँगा और इस टाइम मेरा रेस्ट पीरियड बिटवीन एक्सरसाइजेस होगा 5 से 10 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर जब मैं थर्ड सेट करूँगा उसमें मैं बिल्कुल 15 सेकेंड कर मैं लूँगा। So I hope guys you like this video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to the channel for further updates. बच्चों को मज़ा आ रहा है। Okay. I hope guys you like this video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe. Till the time we meet again, eat more, sleep more and live more. Thank you.